दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस। पहले वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट और एक एग्जांपल किया था। आज एक एग्जांपल और सम डेफिनेशंस हैं। देखिए, लेट आर एन बी ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। डिफाइन ए फंक्शन डिफाइन है समेशन आई फ्रॉम 1 to n x I y I. दिस फंक्शन इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर। वी हैव टू शो दैट। सो इनर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था सिमेट्री प्रॉपर्टी, लीनियरिटी एंड नॉन नेगेटिव। तो करते हैं प्रूफ। तो सिमेट्रिक में क्या था हमारे पास, x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स कॉन्जुगेट। सो देखिए, y कोमा एक्स बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये टेकिंग कॉन्जुगेट we have both side conjugate. So here yi comma xi का conjugate क्या होगा, because xi and yi belongs to real, so this is equal to xi yi। ठीक है, because xi yi are reals, तो real का conjugate क्या होता है, real। और xi comma yi किसके बराबर होता है, yi xi, because r is an abelian group, so you can write this। So first condition is hold। now second is लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी में हमें ये शो करना होता है। ओके, फॉर दिस लेट टेक एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एन, दिस एन टपल वैक्टर्स, वाई इज आल्सो एन टपल वैक्टर्स। सो ए एक्स प्लस बी वाई इज दिस। नाउ बाय डेफिनेशन जेड कैन बी मल्टीप्लाई बाय दिस, a taking a commons, you will get your answer। in second condition x comma x, this is x square by definition, this x square is greater than 0, x1 square greater than 0, x2 square greater than 0, because these are non-negative, sum is also non greater than 0। if x comma x is equal to 0, the square sum of all the square quantities is 0, this implies that x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, in that case this is equal to 0, which means x is 0 vector। hence function defined over Rn is a inner product। so let's see, we be an inner product space, we have to show that for any arbitrary ABC belongs to field and arbitrary UVW belongs to vector space, then first condition, second condition, these are the scalar multiple, this is the linearity, third condition is linearity under conjugate, and fourth is zero vectors की inner product always 0, and fifth condition is u comma v is equal to 0 for every v belongs to 0। inner product किसी वेक्टर की v के साथ अगर 0 है तो वो वेक्टर ही क्या होगा, 0 वेक्टर्स। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि 0 is only the vectors whose inner product is 0 for all the vectors belongs to vector space। okay, so we have given this v is an inner product, so all the conditions, the symmetry, linearity and the non-negativity are hold। so using these three conditions we will prove the result one by one, 1 2 3 4 and 5। okay, so let's see if v is an inner product space। so by the linear condition, this is a linear condition in under inner product space, so if you take the b is equal to 0, you will get your answer, that is first। okay, for second condition देखिए, we have v comma au is equal to, using the symmetric property, au comma v of conjugate, and now you can take the first result here, we can use first this, so using the first result you will get this। so product here is a u comma v कॉन्जुगेट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट चल रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आपको पता है z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 z2 conjugate। so using this
you will get A conjugate comma V or पूरे का conjugate. Now under again using symmetric property, so you will get symmetric property this equal to A conjugate and V comma U. So this is your result. This is second condition. Okay, using third condition is linearity under conjugate. So this is first again using symmetric condition, that is now using the linear property of conjugate here, u b v comma u plus c w comma that is u और ये पूरे का है कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट. तो फिर यूजिंग अगर फिर से हम यूज़ करने वाले हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट. तो ये क्या होता है आपके पास सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्जुगेट. तो यहाँ पर वी वैल्यू यूज़ की हमने बी कॉन्जुगेट. अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नाउ अगेन यूजिंग सिमेट्रिक कंडीशन यू विल गेट योर रिजल्ट. फोर्थ देखिए 0 कोमा वी, 0 का इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 0. सो यहाँ पर 0 कोमा 0 लिखा है, दिस इज 0 वेक्टर और ये 0 है तो ये बाहर आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज 0 ऑलवेज. तो दिस योर फोर्थ कंडीशन. नाउ फिफ्थ कंडीशन u कोमा वी हैव गिवन u का इनर प्रोडक्ट v के साथ और एवरी v के साथ क्या रहा 0. सो इफ यू टेक u and v are equals, here is condition u comma u is 0 and we have given this is inner product. So by definition if and only if u is equal to 0. So these 5 conditions are very important, so remember, and using this to prove the more important results we will prove the next video why we define inner product and triangle inequality, squares inequalities, and many more important results. So try practice and find the answer why we define the inner product. Thank you.